So we are going to start with calendars and then we will move to clocks. A very easy topic, both of them. Okay. Now, when we talk about calendars, the basic type of question that is asked in calendar is randomly, which day is 23rd Feb 1992, or which day is, what will be the day on 15th August 1947? Questions like this is asked, right? And everything depends upon a single thing, that is concept of odd days. Concept of odd days, right? इसी पे depend करता है. Now, what is odd days and what is the concept behind this? Let's understand this. In very simple language, odd days simply means days left after converting days left after converting given days into weeks. Days left after converting given days into weeks. For example, if you are having 10 days, then odd days will simply means 1 week plus 3 days. There are three odd days. There are three odd days, right? So if there is a time period of, let's say, 120 days. Now, how many odd days will be there in 120 days? बताओ मुझे. How many odd days will be there in 120 days? Perfect. 120, right? One. Okay. So 120 days simply means 17 weeks plus 1 day. 17 weeks plus 1 day. So the number of odd days are one. Right? Simple as that. ठीक है जी. Okay. Now let's move to the next thing. We know what is leap year. We know what is non-leap year. Right? Okay. Now, how many odd days are there in a leap year? How many odd days are there in a leap year? बताओ मुझे. 5. How 5? 2 होगा ना बेटा. 366 days है अपने पास. That is 52 weeks plus 2 days, which means there are 2 odd days, right? Okay. And in a non-leap year, there is 1 odd day. Okay. In a non-leap year, there is 1 odd day. Now, this is something that we should know. First thing. Okay. Secondly, though more or less everyone knows that what is a leap year, what is a non-leap year, but still for a better understanding, let's revise it once. Okay. 21 year, 2100. Is it a leap year on a non-leap year? ये कौन सा year है ये? Leap year है या non-leap year है? Perfect. It is a non-leap year, right? It is a non-leap year. Now, we have to understand this very carefully that for the numbers which are ending with 00, the years which are ending with 00, for them, the criteria to be a leap year is they should be divisible by 400 and not 4. ठीक है. जो भी आपके ईयर सेंचुरी में खत्म होते हैं, 00 पे खत्म होते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया रहता है कि वो आपके पास 00 से खत्म होने चाहिए, लीप ईयर से खत्म नहीं होने चाहिए. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके. 400 से डिवाइड होने चाहिए. जैसे कि 2400 इज अ लीप ईयर, राइट? 2000 वाज अ लीप ईयर. 2800 would be a leap year, but 2100, 2700, all these years are not leap year. Okay. Now, tell me from year 1 to year 100, year 1 to year 100, in this time period of 100 years, how many odd days are there? How many odd days are there in this time period? बताओ कितना होगा आंसर इसका. आपके जो ऑड डेज है कभी भी 6 से ऊपर नहीं होंगे. दे विल नेवर बी ग्रेटर देन 6, राइट? यू कैन ऐड देम बट एट द एंड यू विल कन्वर्ट देम. Perfect. So 100 years, how many leap years are there? Out of 100 years, how many leap years are there? कितने हैं? 24. Perfect. Right, because the 100th year is not a leap year.
दो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, दो लीप ईयर इज आफ्टर एवरी 4 years, therefore the number of leap years should be 25, but it is not 25, it is 24, right? And if I remove these 24, the leftover is 76. There are 24 leap years, there are 76 non-leap years, right? Okay. Now in every leap year there are two odd days, so into 2, that is 48. In every non-leap year there is one odd day, so into 70, 76 in this. So total becomes 124, which is 17 weeks plus 5 days. 17 weeks plus 5 days. Now 17 weeks plus 5 days, which means, now how does calendar work? That if at the end there is zero odd day from which our year started, our century started, zero odd day is called Sunday. Right? At the end, if there is zero odd day is Sunday. If there is one odd day, that is Monday. Two odd day माने Tuesday, and so on up to six odd day माने Saturday. This is what the circle is. अब हमारा काम सिर्फ इतना है. Our work is only to find the odd number of days till the given date. Right? Why is 100th year not a leap year? Because your rotation is completed. जो आपकी अर्थ की रोटेशन कंप्लीट होती है ना, वो 4 years something 6 hours and there are some seconds which are extra there, right? Those 6 hours are those जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, वो 6 घंटे हमेशा आपके जो 365 डेज और 6 hours, तो जो वो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं वो आपके हर 4 साल में एडजस्ट हो जाते हैं. लेकिन जो कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा होते हैं वो हमेशा 400 सालों में एडजस्ट होते हैं मिलके. इसलिए आपका 100, 200, 30 ईयर, 300 ईयर आपका लीप ईयर नहीं होता. जो आपकी अर्थ की रोटेशन है वो 365 days, 6 hours एंड देयर आर सम सेकंड्स, राइट? इसलिए ओके, चले आगे. यहां तक क्लियर है? ओके. नाउ इन 100 years there are how many odd days? Bhavya, my last line was that Earth completes its rotation in 365 days, 6 hours, and some seconds. These 6 hours cumulate to 24 hours in 4 years, thereby making the fourth year a leap year, giving it an extra day. But these seconds, they accumulate totally in those 400 years, thereby making 100th, 200th, and 300th year a non-leap year. Directly 400 is the leap year. This is the basic concept behind it. Okay? Okay. Now in 100 years, we have 5 odd days. Okay, fine. What about 200 years? 3. Perfect. Right. 5 the 5 plus 5, 10, which is 1 week plus 3 days, which means 3 odd days. Okay, fine. Very well. Okay. In 300 years, 1 odd day. Perfect. 15 means 2 weeks plus 1 day, which means 1 odd day. Perfect. Okay. And 400 years, perfect. 400 is 0, right? Ideally, you can say that it should be 5 into 420. But since 400th year is a leap year, unlike 300, 200, and 100, therefore it will bring in one more extra day. Therefore, the number of odd days are 2021, right? Which translates into 0 odd days. Which translates into 0 odd days. So this is a kind of a cycle that we have to remember. 5, 3, 1, and 0. This is the basic task. So now this is a cycle. We have reached 0. This will keep on going on. 100, 200, 300, 400. And after that 500 will again bring 5 odd days. ठीक है? अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं that in 2200 years, how many odd days are there? What will be your answer? In 2200 years, how many odd days are there? Perfect. 3 is the right answer. Perfect. Okay. You will simply say there is a cycle of 400. The cycle is 400. So 400 into 5 is 2000. And I have to reach 2200, which means 200 extra years. 200 extra years means 3 odd days. Okay. Is that clear, everyone? Yes or no?
ओके फाइन, ठीक है। Now, the question they ask sometime is that we can ask what is the day on 23rd Feb 1992, right? 23rd Feb 1992. We have to calculate the day on this date. Okay. Now, a very easy task. We have to find the number of odd days up to this day. इस डे तक कितने odd day थे? So, what is step one? हम देखेंगे इससे पहले सेंचुरी कहाँ कंप्लीट हुई थी. Where was century completed? Century was completed till 1900. Right? Century was completed at 1900. Now, how many odd days are there till 1900? 1900 तक कितने odd days होंगे? बताओ. Perfect. आप कहेंगे 1900 is nothing but 1600 plus 300. So 1600 will bring in 0, 300 will bring in 1. So up to 1900, there is only one odd day. So I'll keep it aside and I will move on. My step 2 is to find the number of odd days from 1901 to 1991. ठीक है. Remember this that 1992 is going on. 1992 अभी चल रहा है, right? So I have to calculate the number of odd days till the year which is completed before it. That is 1991. So how many years are these in totality? These are 91 years. Please remember these are not 1991 minus this 90. It is 91. राइट. क्लास में अगर रोल नंबर 1 से 91 होता है तो वो 91 बच्चे होते हैं, 90 बच्चे नहीं होते. ठीक है. सो दीज आर 91 ईयर्स. सो इन 91 हाउ मेनी ऑड डेज, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? फटाफट से बताओ 91 में कितने लीप ईयर्स होंगे? 22. हाउ मेनी नॉन लीप ईयर्स आर देयर? हाउ मेनी नॉन लीप ईयर्स आर देयर? 69. Perfect. Now 22 leap years, 69 non-leap years. Now let's calculate the odd number of days here. In 22 leap years, how many odd days? 2. So that translates to 44. In this 69, only 1. So this translates to 69. So total up to this point, 44 plus 69, total is 113. The total is 113. Now let's keep it aside. इस 113 को भी एक जगह पे लिख लेते हैं. Now where I have reached, I have finished 1991. Now my task is not complete. My task is to find the odd number of days up to 23rd Feb 1992. Now once I have completed my years, now I will go month-wise. Now I have to go month-wise. So it is 1992 has started. The first month is January. How many days January has? January has 31 days. So if it has 31 days, how many odd days are there? कितने ऑड डेज होंगे? 3. परफेक्ट. जनवरी हैज 3 ऑड डेज. नाउ इन फेब्रुअरी 23rd, राइट? हाउ मेनी ऑड डेज? नाउ डोंट कैलकुलेट द फेब्रुअरी कंप्लीटली, राइट? बिकॉज अभी फेब्रुअरी चल रहा है, राइट? सो 23. सो हाउ मेनी ऑड डेज? 2 ऑड डेज. Okay. Now if I add them up, 1 odd day is here, 113 is here, 5 are here, right? So 1, 114, 119. Total is 119 odd days, which is 17 weeks plus 0 days. Now, what is the ultimate number of odd days left? 0 odd day. What is 0 day? 0 day कौन सा होता है आपके पास? Sunday. Perfect. Super set. This is the answer. क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो प्लीज? You don't need to check it from somewhere. Trust me, it's my birth date, so I am pretty sure about it, right? Don't check it from anywhere, just in case if you are. 119 कैसे आया? यार आपने सारे डेज को आपने कैलकुलेट किया कि जो ये 1 था, this 1 plus this 113 plus these 2 plus these 3, all of them together, right? यार एक ही बात है, आप 113 को 7 से कर लो या सबको ऐड करके कर लो, बात तो एक ही रहेगी ना. आपने 113 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 इन सबको मिला के 7 से करना है, तो या अलग अलग कर लो या ऐड करके इकट्ठा कर लो, क्या फर्क पड़ेगा त्रिशाल? ठीक है. लास्ट पार्ट में बताया था कि जब हमने 1901 से 91 तक हमने कहा कि 22 लीप है, 69 नॉन लीप है, तो आपने 44 प्लस 69 लिखा, राइट? 113 आया. उसके बाद आपने जनवरी और फरवरी के इकट्ठे अकेले के लिए ऑड डेज निकाले, इसको ऐड किया और उसके बाद आपने सारे ऑड डेज इकट्ठे करके टोटल निकाल लिया कितने डेज बचे हैं. ठीक है.
Okay. Now let's practice the question. Everyone calculated for 15th August 1947. 1992 was a leap year. ठीक है. 1992 was a leap year. Definitely it was. But only 3rd Feb, तो वहां पे लीप का इफेक्ट पड़ा नहीं है अभी. Right? Yes, 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 Parth. Yes, Parth. ठीक है. 15th August 1947. Please do not answer before I ask you to answer. If you answer before I ask you to answer, I will remove you from the session directly. ठीक है. तब तक आंसर मत करना जब तक मैं नहीं कहता आपको. हाँ जी, व्हाट्स द आंसर? Friday, everyone. Okay. So 15th August 1947. Let's go step by step. From 19 up to 1900. Up to 1900. How many odd days are there up to 1900? Only one odd day. Then from 1901 to 1946. How many years are these? 46, which has 11 plus 35 leap years. Okay, 11 plus 35. So 11 are leap years, 35 are non-leap years. So 22 and 35. The total here is 57 up to this point. Okay. Then we move to January. Okay, January 3, February. So how many are there in February? How many odd days are there? क्या लिखेंगे यहाँ पे? Zero. Perfect. Non-leap years zero. Right. March 3, April 2, May 3, June 2, July 3, and August only one. I will not write 3 in August. I'll write only one. Why? Because 15th August, that is 2 weeks plus 1 day. So this 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 57 and 17, 74 or 175. So 75 odd days are there in totality, which translates to 10 weeks plus 5 days, right? 5 odd days extra means Friday, right? Is that clear? Okay. If 16th September 1984 is Monday, what will be day on 14th March 1993? करो ये. Try this question.
हाँ जी, व्हाट्स द आंसर गाइस? मंडे. Okay. So your only task is to take it as a base and calculate the number of odd days up to this date. इसको base मान लेंगे. Now Monday is the 0th day and starting from this point we have to calculate the number of odd days up to this point. So when I talk about 16 September 1984, right? So in September, how many odd days are left in September? या फिर how many days are left in September? 15, right? So 14. So 14 के साथ odd days क्या लिखूंगा? 0, right? October, number of odd days. October में number of odd days 3. November 2. December 3. Right. Now this year is complete. Now let's talk about 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. कौन सा निकालें? 92. So from 85 to 92, these are 8 years. How many years are leap year? Leap year here? 2. 8 में से 2 साल लीप है हमारे पास. Right. So in 6 non-leap years, 2 leap years. Right. So 4 and 6. 10 odd days are up to this point. 10 odd days are up to this point. Okay. Now after this we will enter 1993. Right. So January 3, February 0, March 0. बस उसके बाद सारे 3 2 5 3 8 और 10 18. 18 डिवाइड बाय 2 4. We will go 4 days ahead of Monday. Right. क्या ये बात समझ आई? टोटल ऑड डेज आर 18. 18 2 weeks plus 4 days. So मंडे से 4 दिन आगे चले जाएंगे हम. Is it clear everyone? Friday is the required answer. Okay. Now one of the direct questions that they can ask: which day can never be the first day of century? Which day can never be the first day of century? राहुल कैसे बेटा? मंडे के बाद 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. निश्चित हमने सारे पार्ट्स को ऐड किया बच्चों, ऑड डेज जितने भी थे उस ऑड डेज टोटल आए 18. तो 18 डिवाइड 18 को जब कन्वर्ट किया तो वो आया 2 वीक्स प्लस 4 डेज. तो वो जो 4 दिन एक्स्ट्रा थे वो हमने सॉल्व कर लिए मंडे के बाद 4 दिन. और देयर इज नो स्लाइड हियर. कोई स्लाइड नहीं है यहाँ पे. एक सेकेंड, ये किया तो 10 और क्या हम 3 2 5 3 2 5 3 8 और 10 18 और 3 21. 21 आया सॉरी. ठीक है. 21 डिवाइड बाय 7. 0 ऑड डेज. 0 ऑड डेज माने मंडे. मंडे इटसेल्फ. मैंने जनवरी के 3 देखे ही नहीं थे. ठीक है, चले आगे. अब क्लियर है? अब क्लियर है? ओके. Now the question I had put was, which day can never be first day of century? क्या आंसर है इसका बताओ?
आदित्य थोड़ी सी गलती करती है बेटा। ओके, सो मुझे ये बताओ, जो आपके 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज आते हैं? 5। ओके। अच्छा, 200 में? 3। 300 में? 1। 400 में? 0। तो जो आपके ये दिन है ना, दीज डेज विल ऑलवेज बी द फर्स्ट डे, दे कैन ऑलवेज बी। ये दिन है जो पहले दिन बन सकते हैं। इसके अलावा द डेज विच आर मिसिंग डेज, व्हाट आर दोज मिसिंग डेज? वेडनेसडे, जो 3 आपके इवन डेज हैं, वो इवन डेज कौन से आएंगे आपके? इवन डेज। परफेक्ट, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ओके। ओके, डू वन मोर क्वेश्चन। डू वन मोर क्वेश्चन। आपकी सेंचुरी एंड किससे हो रही है? आपकी सेंचुरी एंड हो रही है इससे, 3, 5, 1 एंड 0। इससे आपकी सेंचुरी एंड हो रही है। तो शुरू किससे होगी? 2, 4, 6। इससे आपकी सेंचुरी स्टार्ट होगी। योर सेंचुरी विल ऑलवेज स्टार्ट विद दीज डेज। ठीक है? योर सेंचुरी विल ऑलवेज स्टार्ट विद सेकंड डे, फोर्थ डे एंड द सिक्स्थ डे। It can never start with one zeroth day, 1st day, 3rd day, and 5th day. Okay. Now calculate the final question quickly. What is the day on 16th October 1996? फटाफट से निकाल दो। हाँ जी, व्हाट्स द आंसर? वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे। ओके। ओके। अप टू 1900 you have only one odd day. From 1901 to 1995 there are 95 years, 23 leap years, 72 non-leap years, right?
23 लीप है, 72 नॉन लीप है। तो यहाँ पे आ गया 46, यहाँ पे आ गया 72, राइट। यहाँ तक हो गया 118। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पे जनवरी में कितने आए, 3। फेब्रुवरी में कितने आए, फेब्रुवरी में कितना आएगा, फेब्रुवरी का एक लिखा था कि नहीं लिखा था, 1996 इज अ लीप ईयर, राइट। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त इज अगेन 3, ठीक है, सितंबर इज 2 एंड अक्टूबर इज अगेन 2। कितने हुए, 3 4 7 9 12 14 17 20 22 24, 24, ठीक है, 24 142 1 143, क्योंकि 143, तो यह आया 20 वीक्स प्लस 3 डेज, यही आया सबका, ठीक है। तो इट ट्रांसलेट्स टू, ठीक है, डन। 0 डे संडे, 1 डे मंडे, 2 डे ट्यूसडे, 3 डे वेडनेसडे, राइट। परफेक्ट, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द, yeah, your century can never start with odd days, it will always start with even days. Your century will always end with odd days. तो जब भी वो एंड ऑड डेज से करेगी तो स्टार्ट इवन डेज से करेगी, ये आंसर था उसका। ओके, 12 3 6 9। Okay, so let's start with the basics. There is only one concept that you should understand. If you understand this, everything else is very easy. Okay. Now, what is the total measure of clock? Total measure is 360 degree. Okay. Now, it is very similar to time speed distance. The only difference being, in time speed distance, the distance is in kilometer or meter. Here, the distance is in degrees. The distance is in degrees. Speed is in degree per minute. The speed is in degree. This is the only difference, right? Okay. Now, total speed is sorry, total circle is 360 degree. Now, when I say total circle is 360 degree, can I say there are 12 partitions, right? First partition, second, third, fourth, and so on up to there are 12 partitions. 12 partitions, 360 degree. So each partition is 30 degree. Each partition is 30 degree. Now, when each partition is 30 degree, right? Now let's think it in this way कि अभी अपने पास 1 बजा हुआ है, right? 1 घंटा हो गया, अपने पास 2 बज गए, right? In 1 hour, I have 2 p.m. Now, how much distance has our minute hand traveled? The distance traveled by minute hand is from 12 to 12, that is 360 degrees, right? So, minute hand in 60 minutes has traveled 360 degree, which means 6 degree per minute. 6 degree per minute. Okay. Okay. Secondly, if I talk about our hand in 30 minutes, sorry, in 60 minutes, our hand in 60 minutes has moved 30 degree. So the speed of our hand is half degree per minute. इसकी speed कितनी हुई? Half degree per minute. So it is our hand. Sorry, it is our minute hand. It is our hand. Now, since both of them are moving in same direction, अब दोनों move तो same ही direction में कर रहे हैं ना? Since both of them are moving in same direction, this implies that the relative speed of our hand over, sorry, of minute hand over the our hand is 5.5 degree per minute, or 11 by 2 degree per minute, or 11 by 2 degree per minute. Now this 11 by 2 is the most important number in this clocks and calendar topic. इससे important number ही कोई नहीं है, 11/2, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? Is it clear, yes or no? Okay.
Shriparna, I just said बच्चा कि in 60 minutes, right, in 60 minutes the minute hand has traveled 360 degrees. So उसकी स्पीड होगी 6 डिग्री पर मिनट अपने पास. लेकिन जो आर हैंड है वो तो एक पार्टीशन कवर कर पाया ना, 1 से 2, 2 से 3 है कोई भी एक पार्टीशन. तो उसने कितना कवर किया 60 मिनट में? 30 डिग्री. इट कवर्ड 30 डिग्री इन 60 मिनट्स. सो आर्स हैंड स्पीड इज हाफ डिग्री पर मिनट. नाउ मिनट हैंड इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट 6 डिग्री पर मिनट. Our hand is also moving in this direction at half degree per minute. So what is the relative speed? 6 minus 1 by 2. That is 11 by 2 degree per minute or 5.5 degree per minute. Is that clear, Nathan? Is this clear, Shiparna? Okay. Now, now let me give you a very simple question that यहाँ पे this is a straight road. This is a straight road. Here it is a thief. Thief is here it is police. The distance between police and thief is 100 meters. इनका distance है 100 meters. If the speed of thief is half kilometer per hour, this distance is also 100 kilometer. If this speed is 6 kilometer per hour and distance is let's say 1100 kilometers, 1100 kilometers, then in how many hours will the police catch the thief? क्या आंसर आएगा आपका? डिस्टेंस है 1100 किलोमीटर, ये स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, थीफ की स्पीड है हाफ किलोमीटर पर आवर. हाउ मेनी आवर्स? आपने कहा 200 आवर्स, राइट? वेरी इजी. आपने 200 आवर्स कैसे कहा? आपने सिंपली कहा दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1100 एंड सिंस इट इज अहेड it will catch it with the relative speed 6 minus half. So 1100 divided by 11 by 2, that is 200 hours, right? This is how you calculated, right? Now you applied the relative speed here. आपने क्या फॉर्मूला लगाया? आपने relative speed का फॉर्मूला लगाया. आपने सिंपली कहा distance divided by relative speed. Why? Because relative speed also mean that how much is the police gaining over the thief. या फिर ये सोच लूं कि अगर thief move ही नहीं कर रहा, if the thief is still, then the police is moving at 5.5 kilometer per hour. ठीक है? Very important term that if the thief is still, then I will remove half from both because I'm considering it to be still, which means the relative speed is only 5.5 kilometer per hour. क्या ये बात क्लियर है सबको? Is this clear, everyone? Okay. Now, from this, we will form the basic question of clocks. What is that basic question? Let's say the time is 4 a.m. 4 p.m. The time is 4. Now the question says, in how much time will they coincide? In how much minutes? At what time will they coincide? Or at what time will they make an angle of 0 degree? This is the question. Now what will be the answer? The answer is 240 by 11. Perfect. See, very simple. What we will say that now the distance between them is in degrees. That I have told you. Now the R hand is at 4. This is at 12. There are 4 partitions. 4 partitions mean the distance is 120 degrees. And the relative speed is 11 by 2. So it will catch it with the relative speed that is 240 by 11 minutes. तो ये आपका आंसर आएगा. आपको exactly यही दिया होगा ऑप्शन में 240 by 11. No approximation, nothing. Is it clear? Yes or no? Okay.
Now the next question is, what time after 4, time after 4 will they make एंगल ऑफ 90 डिग्री? कितनी देर बाद वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे? हाँ जी बताओ. Very good people. There will be two times, right? Very good. So it's as easy as that. Let's say if I'm saying that one person is standing here at 0, one person is standing at 120, and I want that distance between them is 90. मैं तो यही चाहता हूँ ना कि उनके बीच में 90 डिग्री बन जाए. तो there are two possibilities. When this person covers 30 and reaches here, so 90 is left. When this person overtakes him and reaches at 210 and reaches at 210, even then there will be 90, which means 190 is here and 190 will be somewhere here, right? So for the first 90 he just has to cover 30 degree. अभी उनके बीच की दूरी 120 है. जैसे ही वो 30 कवर करेगा 90 बचेगी. So those 30 will be covered in 30 divided by 11 by 2, that is 60 by 11. And the second 90 is that they cover किया 120 cover किया and then 90 और cover किया, right? 210 divided by 11 by 2, that is 420 by 11, right? क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? ओके. अब इसी में 180 निकालो. शिवाली देख, अभी वो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? 120 है अभी. राइट नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 120. तो मैंने कहा कि जब उसने 120 पूरा कवर कर लिया उसके बाद 90 और आगे निकल गया, तो 120 प्लस 90 टोटल कितना कवर करा? 210. 210 एट द स्पीड ऑफ 11 बाई 2, तो आंसर इज 420 बाई 11. इस तरह से.
हाँ जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ 180? परफेक्ट, 600/11। सो वही आप कहेंगे कि पहले 120 है, 120 में हमने 180 करना है। अब 180 या तो हमेशा पहले बनेगा या बाद में बनेगा, राइट? 120 प्लस 180, so the total distance is 300, 300/11/2, 600/11। क्या ये क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 120 है अभी, राइट? और मुझे 180 करना है। अब ये सुई पीछे तो जाएगी नहीं, आगे ही आएगी, तो उसको पहले ये 120 कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ये 180 और कवर करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। टोटल 120 और 180, टोटल 300 हो जाएगा। तो 300 का डिस्टेंस 11/2 की स्पीड, ठीक है? ओके, हाउ मेनी टाइम्स in a day angle of 0 degree is formed? Angle of 0 degree is formed between minute and hour hand, between minute and hour hand। क्या आंसर होगा इसका? परफेक्ट, 22 इज द राइट आंसर। सो लुक्स लाइक, देखो हर घंटे में एक बार होता है, इन एवरी आवर दे कोइंसाइड वंस, सो आइडियली इट शुड बी इन 12 आवर्स, इट शुड बी 12 टाइम्स, right? Ideally it's once in every one in every hour, but in 12 hours it should be 12 time। But when we talk about the time between 11 to 1, जब हम 11 से 1 बजे के बीच की बात करते हैं और उसके बाद जब 1 बजता है, तो उसके बीच में देख कोइंसाइड ओनली एट 12, ओनली एट 12। सो 11 से 1 टाइम पीरियड 2 है, 2 आवर्स का है, तो कोइंसाइड 2 बार करना चाहिए, लेकिन वो होता सिर्फ एक टाइम है, right? So this is first, okay। Second is how many times in a day they form an angle of 90 degree? एक दिन में 90 कितनी बार बनता है बताओ? 44, परफेक्ट। हर घंटे में 2 बार होता है, इन एवरी आवर इट इज फॉर्म्ड ट्वाइस 90 डिग्री, बट इन 12 आवर्स इट इज फॉर्म 22 टाइम्स। वेयर आर बी लूजिंग 2 टाइम्स? वन बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में कितने बजे बनता है? सिर्फ 3 बजे बनता है, 3 AM या PM लगा लो जो मर्जी। 2 और 4 के बीच में 2 घंटे हैं, तो 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बन सिर्फ 3 PM वाला कॉमन आ रहा है, तो आपने एक बार वहां लूज कर दिया। सिमिलरली 8 and 10, ठीक है, बनना चाहिए आपका 4 बार, लेकिन आपका 9 बजे वाला कॉमन हो जाता है, तो एक बार आपने वहां लूज कर दिया। ठीक है, तो आपने यहां लूज कर दिया 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा, एंड इन 24 आवर्स इट इज 44 टाइम्स। ठीक है, ओके। 180 डिग्री का क्या आंसर आएगा?
परफेक्ट, 22 इज द राइट आंसर। हर घंटे में एक बार करता है, इन एवरी आवर 180 इज फॉर्म्ड वंस, बट बिटवीन 11 टू 1, बिटवीन 11 टू 1, राइट, वहां पे आपका, सॉरी, बिटवीन 5 टू 7, बिटवीन 5 to 7, जो 6 बजे का आपका टाइम होता है वो एक कॉमन हो जाता है 180 डिग्री का। इन दीज 2 hours 6 इज कॉमन, सो दैट इज वाई वन एंगल इज लॉस्ट, वन टाइम इज लॉस्ट देयर। तो 12 में वो 11 बार बनता है, इसी तरह 24 में वो 22 बार बनता है। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड एट 4:44? ठीक है, 4:44 पे कितना एंगल है? For 122? Okay. So what we will think? We will simply think कि यार 4 बजे कितना एंगल है? 4 बजे एंगल है 120 डिग्री का, राइट? एट 4 PM द एंगल इज 120 डिग्री. Now this minute hand is moving for 44 minutes, right? Minute hand को 44 minutes move कराते हैं, and we are not moving the R hand. We are not even visualizing that R hand is moving. So if only and only minute hand is moving, how much will it travel? ठीक है, 44 into 11/2, that is 22 242, राइट? 242 घूम जाएगा। अब मिनट हैंड alone has traveled 242 and the distance already was 120, which means minute hand overtook 120 and took 122 extra, तो उसने 122 extra degrees move किए, so answer is 120, answer is 122, 122 degree. Is it clear, yes or no? ओके, ऐसे सोचो कि अभी उनके बीच की दूरी थी 120, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका, सॉरी, ये आपका आर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। इनके बीच में दूरी 120 है। दिस मिनट हैंड इज मूविंग नाउ एट द स्पीड ऑफ 11/2, क्योंकि इसको तो मैं स्टिल मान रहा हूँ, दिस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 11/2, एंड क्योंकि 444 है तो इट इज मूविंग फॉर 44 मिनट्स। सो 44 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 11/2, तो कितना मूव करा? 242। तो उसने 120 ये कवर किया, 122 और कवर किया, टोटल पहुंच गया 242 पे। अब समझ आया? नाउ इज क्लियर? सी, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, प्लीज चेंज योर चैट सेटिंग्स टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज, राइट? ओके, a basic question and the final question is, a person went out between 3 to 4 and returned between 4 to 5, 3 से 4 के बीच में गया और वो 4 से 5 के बीच में आया। he founds that he founded that minute and our hand have changed their positions, have interchanged their position.
right? What time did he leave the house? What time did he leave the house? ठीक है. सॉरी 180 वाला ऐसा था, मैंने आपको कहा था कि हर एक घंटे में एक बार 180 बनता है, हर एक घंटे में. लेकिन जब 5 बजे होते हैं और उसके बाद जब 7 बजते हैं, उसके बीच में 2 घंटे आए. 5 to 7, देर आर 2 आवर्स. इन 2 घंटे में आपके पास 2 बार 180 बनना चाहिए. लेकिन जो 6 बजे वाला 180 होता है ना, वो कॉमन होता है. राइट, 6 बजे वाला कॉमन होता है. तो इसीलिए आपका वो 2 घंटे में बनना चाहिए 2 बार, लेकिन एक बार क्योंकि कॉमन आ गया तो आपका वहां से एक हट जाता है. ठीक है. ओके, नाउ ट्राई दिस फटाफट से. Founded is correct. Founded is the perfect form. Mayank, the answer is no and yes. डू नॉट ट्राई टू अप्रोक्सीमेट योर आंसर. मतलब दिमाग में मत सोचो कि कितने बजे गया होगा, विजुअलाइज मत करो. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर एक ने इतना किया तो दूसरे ने कितना किया होगा, बस ये क्वेश्चन है.
Honey, let's solve it. So first of all, I'll tell you the small concept and then we will do the theory behind it. Okay. So यहाँ पे कहीं पे let's try to visualize that what could be the time. तो टाइम कुछ इस तरह से होगा 3 बज के यहाँ पे. The hour hand was between 3 and 4. The minute hand was between 4 and 5. Somewhere like this. ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा घड़ी पे जब वो गया होगा. तो जब वो वापस आया तो इंटरचेंज हो गए थे. So if I just in case if I know that where this theta is, where this r hand is, तो मेरी बात बन जाएगी. अगर मुझे इसकी इनिशियल पोजीशन पता लग जाए तो मुझे बात बन जाएगी मेरी. क्या ये बात समझ आती है हमें? है ना, इनिशियल पोजीशन जाननी है मुझे इसकी. Now let us assume a very simple thing. Let us assume कि when the person left, the distance was theta. The distance between them was theta degrees. Now tell me, the question says that their final position is something like this, that r hand is now here and minute hand is now here, right? ये इनकी final position है. So can I say the r hand has covered theta degree. r hand ने तो यहां से यहां पे आया ना, थीटा डिग्री कवर किया है. इन द सेम टाइम आपके मिनट हैंड ने कितना कवर किया है? हाउ मच योर मिनट हैंड हैज कवर्ड? बताओ फटाफट. मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया है? 360 माइनस थीटा. परफेक्ट. 360 माइनस थीटा, क्योंकि वो यहां से घूम के यहां तक आया है. ठीक है ना, वो थीटा छोड़ के पूरी रेवोल्यूशन ली है उसने. ओके. एट व्हाट स्पीड? एट 6 डिग्री पर मिनट, राइट. विच मींस इसने जो टाइम अपना कवर किया इस स्पीड पे, इसने वही पूरा किया 6 डिग्री पे. क्या ये चीज समझ आती है कि जितनी देर में आर हैंड ने थीटा कवर किया एट द स्पीड ऑफ आर हैंड विच इज हाफ डिग्री पर मिनट, in that time only the minute hand completed 360 minus theta at the speed of minute hand which is 6 degree per minute. Is that clear? Yes or no? है ना. So let's calculate the theta. Let's calculate the theta. 6 theta is equal to 180 minus theta by 2. 13 theta by 2 is equal to 180. Theta is equal to 360 by 13. Now this theta is 360 by 13, which means minute hand was here. Minute hand was here 360 by 13. यानी ये एंगल 360 by 13 था. Now tell me, 3 बजे के बाद, हमारा क्वेश्चन तो यही है ना कि 3 बजे के बाद वो कितने बजे गया होगा. Our question is that at what time he might have left. अब मिनट हैंड यहां पे है. This theta is 360 by 13. तो can I say minute hand ने time taken for the minute hand to reach here at this point would be this 90 degree. 3 बजे की कितनी देर बाद आया होगा? My question is 3 बजे की कितनी देर बाद आया होगा? This 90 plus this angle 360 by 13 divided by its relative speed, that is 11 by 2, because I am assuming that my r hand is still. कि 3 बजे की कितनी देर बाद हमारा मिनट हैंड उस पोजीशन पे पहुंचा होगा. I am assuming that my r hand is still. That is why I am just taking the relative speed. So the angle was 360 by 13. 90 degree was already there at 3. 90 plus 360 by 13 into 11 by 2 into 11 by 2. ये उसका टाइम आएगा. This will be the time. Whatever this answer is, this is your required answer. क्या ये समझ आता है? Divide by 11 by 2. So divide by 11 by 2. Is this clear everyone? Yes or no? भाई 90 तो पहले से ही था ना वो. अब ये सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो उसको ढंग से. अभी ये मान लो ये टाइम है, उसने 3 बज के कुछ मिनट पे जाना है. अब जो आप मिनट हैंड है, वेयर इज द मिनट हैंड? मिनट हैंड हैज फाइनली रीच दिस प्लेस समवेयर बिटवीन 4 and 5. So how much has the minute hand traveled from here to here? The minute hand has traveled this 90
plus this theta, right? I am assuming that r hand did not move. So the total distance taken by minute hand is 90 plus theta, that is 90 plus 360 by 13. The time taken would be this divided by the speed of the minute hand. What is the speed of minute hand? 11 by 2 relative speed, because I am assuming that this hand is still. So answer is this, इतने मिनट पे वो गया होगा. अब क्या ये समझ आता है? Yes or no? ठीक है. Now you can always remember that whenever the minute and hour hand interchange the position in consecutive hours, जब भी वो consecutive hours में minute hand और hour hand positions change करते हैं, then what is the time at which he goes? The time at which he goes, वो टाइम क्या आता है आपके पास? एंगल एट फर्स्ट आर. व्हाट डू आई मीन बाय एंगल एट फर्स्ट आर? दैट 3 से 4 और 4 से बीच 5 के बीच में आया. फर्स्ट आर है 3. 3 बजे एंगल कितना है? 90. 90 प्लस 360 बाय 13 इंटू 2/11. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इतने मिनट पे वो गया होगा. ये आपका डायरेक्ट टाइम है. तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो गया 5 to 6 में और आया 6 to 7 में, तो आप कहेंगे 5 बजे एंगल होता है 150. सो 150 प्लस 360 बाय 13 इंटू 2/11. क्या ये क्लियर है? ठीक है जी, डन.